Welcome back, student of ICSE board, class 10th, on your own YouTube channel Study Nest. I am Deepak sir. Today we'll do the poem 9 Gold Medals written by David Roth. 9 Gold Medals written by American rock vocalist David Roth is a song that inspires human compassion and cooperation. It's a beautiful poem. The poem is based on the story about 9 different abled athletes in a special Olympic event. David Roth is an American poet, singer, songwriter, and recording artist. His poem 9 Gold Medals is a poignant means including physical pain, records on an incident that takes place at the Special Olympics. Special Olympics are for the disabled people only, when differently able contestants set off for a race. So differently means they all not handicapped, but they were not suffering from the same problem. So they set off for a race. Soon after the race began, one of the contestants out of 9 had a sharp fall. Suddenly he falls down and lies on the track crying out in pain. At the moment he falls down, because of the pain, remember, he is already physically handicapped, and when he falls down he cries out in pain. He loses all hope of winning the medal for which he had trained so hard. He loses all his hope. उसको लगता है वो सारी उसकी उम्मीदें ख़त्म हो गई एक मेडल जीतने की. The 8 other contestants in a remarkable display of empathy means emotionally, and compassion stopped running and returned to help their fallen fellow. The rest of the 8 who had moved ahead, they came back to carry the fallen fellow, the fellow companion of them, back to his feet, and together all 9 of them linked arms and walked to the finish line. So this is something extraordinary. This is beyond imagination. Generally it's a throat cut competition. The people don't wait for others. और यहाँ पे वो एक गिर जाता है एक प्रतियोगी, तो बाकी 8 उसको उठाने आते हैं, उसको लेके जाते हैं, उसको अकेले नहीं छोड़ देते हैं. In recognition of this display of great human compassion, every one of them is awarded a gold medal. Isn't it a beautiful thing? So each and every one got a gold medal, not because they all were winner, because they displayed a human compassion. That's why they all got a gold medal, and each of them got a gold medal. Also 9 gold medals were awarded to 9 the competitors. All of them are winners. The poem celebrates the spirit of care and compassion. What the world needs now is not more competition, but rather more cooperation and collaboration. तो दुनिया को अब कंपटीशन नहीं चाहिए, भाईचारा चाहिए, आपसी सहयोग चाहिए, शायद तभी हम लोग सर्वाइव करेंगे. Now we start with the poem. The athlete had come from so many countries to run for the gold, for the silver and the bronze, many weeks and months in training. So the athletes had come from so many countries, they were there from different countries, and to run for the gold. They all had come with the hope to take part in the Special Olympic to win the gold. अलग अलग देशों से 9 एथलीट आए थे. सबके दिल में एक ही इच्छा थी, एक ही अभिलाषा थी कि वो लोग स्वर्ण पदक जीतेंगे. फॉर द सिल्वर एंड द ब्रॉन्ज, कुछ सोच रहे थे सिल्वर जीत लेंगे या ब्रॉन्ज पदक जीत लेंगे, तो कुछ तो जीत के वो लोग जाएंगे. Many weeks and many months in training, all building up to the game. So they spent a number of months. Remember, they were participating in Olympics, and Olympics is the biggest game event in the world. And so they practiced for so many months. They practiced they have gone through strenuous training for months, very hard training for months to participate in the event with high hopes and dreams of winning gold medal. So many weeks and months in training, and all building up to the game. So they all had come there building up for the game, means that to try and win medal for their country. All round the field spectators were gathered. So a large all round the field, means it's a huge field, and all round the field a large audience were present. Spectators were present at the ground to cheer the participants of the different events, cheering on all the young women and men. All the young women and men, everybody was cheering for the participants who were there on the field.
Then the final event of the day was approaching. So finally the final day had come, the final day was approaching, the last race was about to begin. So the last thing is always very important. जो चीज़ आखिरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पूरे ग्राउंड में लोग भरे हुए थे, दर्शक जो जो से चिल्ला रहे थे, अपने खिलाड़ी का जिसका वो समर्थन कर रहे थे उसका उत्साह बढ़ा रहे थे. आखिर में वो अंतिम दिन आ गया, निर्णायक क्षण आ गया, जिसमें कि आखिरी रेस थी जिसका अब शुरुआत होने वाली थी. द लाउड स्पीकर कॉल आउट द नेम्स ऑफ द रनर. एज इट हैपेंस द लाउड स्पीकर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रनर्स हु वुड टेक पार्ट इन द 100 मीटर रेस वर अनाउंस. सो उन सबके नाम लिए गए जितने भी धावक थे जो 100 मीटर की रेस में भाग लेने आए थे, उन सबके नाम लिए गए. द 100 मीटर रेस टू बी रन. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, द 100 मीटर रेस वाज टू बी रन. 100 मीटर की दूरी की दौड़ जो थी वो शुरू होने वाली थी. एंड 9 यंग एथलीट्स स्टूड देयर डिटरमाइंड एंड पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन. So 9 participants, all determined, all had the determination that they are going to win the competition. सारों के अंदर एक दृढ़ इच्छा थी कि वो लोग इस प्रतियोगिता को जीत के जाएंगे. And lined up behind the starting point. So एक दूसरे के पीछे वो lined up, आपने देखी होगी जो दौड़ने की लाइन होती है, सब थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़े होते हैं. जो सबसे दूर होता है उसको, लेकिन सबको दूरी बराबर ही तय करनी होती है, किसी की दूरी ज़्यादा नहीं होती. जो पीछे होता है उसका गोला, जो आगे होता है उसका गोला बड़ा होता है, पीछे होता है उसका गोला दौड़ने का छोटा होता है, ताकि ये लोग एक ही समय पूरी कर सकें दौड़. एंड पॉइज फॉर द साउंड ऑफ द गन. पॉइज मीन दे वर वेटिंग फॉर द साउंड ऑफ द गन. गन चलती है, वो लोग वेट कर रहे थे या इंतजार करते, गन चलेगी तब वो लोग दौड़ेंगे. द सिग्नल वॉज गिवन एंड फाइनली सिग्नल दे दिया गया उनको भागने का. द पिस्टल एक्सप्लोडेड. धमाका हुआ पिस्टल से, आवाज़ आई और वो लोग भागने लगे. एंड सो डिड द रनर्स ऑन हियरिंग द साउंड. एंड आफ्टर ऑल द रनर्स चार्ज अहेड along the respective tracks. They all started running. वो सारे अपने जो ट्रैक उनका बना था उस पर दौड़ने लगे. सबके ट्रैक अलग अलग बने होते हैं. But the youngest among them stumbled and staggered, and he fell on his knees to the ground. But the youngest, see that, like the way the poet has written, the youngest, who is the youngest one, he fell down. He stumbled, means he moved in an unsteady way, staggered and fell down. और जो सबसे छोटा था वो स्टम्बल करता है, लड़खड़ाता है और गिर पड़ता है अपने घुटनों के बल पे. फेल ऑन हिज नीज टू द ग्राउंड, द एस्फाल्ट ट्रैक. उस ट्रैक पे गिर जाता है जहाँ पे उसको दौड़ना था, जिसमें मिट्टी पड़ी हुई थी उस पे वो गिर जाता है. अब यानी उसकी हार निश्चित थी. रेस में कोई किसी के लिए रुकता नहीं है. बाकी एथलीट आगे निकल जाएंगे, उसको पीछे छोड़ जाएंगे. वो गिरता है, वो उसके गिरने के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं. He not only fell, his dreams were shattered. The determination which he had in his heart was broken. The faith was no more. उसके गिरने के साथ उसकी उम्मीदों को झटका लगता है, वो भी टूट जाती है. He gave out a cry of frustration and anguish. वो जोर से रोता. He cried because he was that cry was full of frustration. Why was he frustrated? Because he worked so hard for months and days and to participate in this event, and he had come here with a dream to win this competition. That's why he was frustrated, because this was not in his hand. ये उसके बस में नहीं था. वो गिर गया लड़खड़ा के. अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी वो उठ के जाए और रेस पूरी कर ले. तो वो निराश हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी थी. ओलंपिक बहुत बड़ा इवेंट होता, उसके लिए आने के लिए आपको पहले क्वालिफाई करना होता, फिर आप आते हैं. एंड एंग्विश, एक्सट्रीम पेन. उसके बहुत दर्द हो रहा था. ही वॉज इन अ ग्रेट पेन. हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट डैश्ड इन द डर्ट. उसके सारे ड्रीम्स थे. द मोमेंट ही फेल ही न्यू दैट ही इज नॉट ऑल हिज ड्रीम्स एंड होप्स एंड एफर्ट्स वर डस्टेड. उसको मालूम था उसके गिरते ही उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए. उसका जो सपना था, जिस उम्मीदों के साथ, जिस शुभकामनाओं के साथ वो यहाँ पे आया था, वो सारी खत्म हो गई. डैश्ड इन द डर्ट. डर्ट मीन्स द मड विच इज ऑन द ट्रैक.
So, अब सब चीज़ें उसमें जैसे हम लोग कहते हैं धूल में मिल गई, everything dashed in the dirt. But as sure as I'm standing here telling the story, means the narrator, one narrator is also there, and as sure as I'm standing here telling the story, the narrator is standing there, he's watching each and everything that's going on there. जो नरेटर है वहाँ पे खड़ा है, वो सब कुछ देख रहा है वहाँ क्या हो रहा है. Not strange one, but here's what occurred. और वो कह रहा है कि बड़ी अजीब व गरीब बात हुई, लेकिन वो बताएगा कि क्या हुआ. So there occurred something strange following this fall. उस गिरने के बाद कुछ बहुत ही अजीब व गरीब बात हुई. The 8 other athletes stopped in the tracks. Is this possible? Isn't it? Is it possible? वो सारे एथलीट अपने ट्रैक्स पे रुक गए. The one who had trained for so long to compete, and those were the athletes who had worked so hard, who had invested so many months and days to participate in this event, a lot of determination, dreams, hopes and faith that they are going to win. They all stopped. That's not in my books. I believe it's like out of all the books of the world, and big, such a big event, Olympic, and all the athletes stopped. ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो दुनिया की किसी किताब में भी नहीं मिलेगा कि सारे एथलीट रुक गए उसके लिए जो गिर गया था. गिरे हुए को हाथ बढ़ा के कोई नहीं उठाता, लोग आगे चले जाते हैं. यही हुआ. तो दैट वाज वेरी स्ट्रेंज that 8 other athletes who were ahead of him stopped in the tracks. Though they had trained very hard for so long to compete with one another and win the medals, the fail of one athlete changed their mind. The fall of one athlete fell down, and that changed their minds at all. One by one they turned round and came back to help him and lifted the lad to his feet. One by one, एक एक करके वापस आए. सब एक साथ नहीं आ गए. एक ने देखा तो दूसरे को दिल में भी ये लगा कि नहीं मुझे भी नहीं जाना चाहिए, तीसरे को भी लगा, चौथे को भी लगा. तो ये क्या पता चलता हमें कि हम कई बार सोचते हैं कि हम ही क्यों करें, लेकिन हम करते हैं, वो शुरुआत होती है, उसके बाद दूसरे उसको फॉलो करते हैं. जब शुरुआत ही नहीं होगी तो फॉलो कौन करेगा. तो दे ऑल टर्न वन बाय वन, means each was waiting for to see the reaction of other, and after seeing the reaction that the first one turned and went back to the one who had fallen down, the second one also did the same, third, fourth, fifth, sixth and so on, and lifted the lad to his feet. Lad means the boy. उसको अपने हाथों पे उठाया, उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दिया. Then all 9 runners joined hands and continued. सारे रनर्स ने हाथ मिलाया और फिर अपनी दौड़ स्टार्ट करी. They all, that's very strange in this world. Then all 9 runners at least joined hands and walked to the finishing line together. The 100 meters reduced to a walk. Now the race was about to complete and the 100 meter reduced to a walk. Means when you are when you do such kind of an act, the distance hardly matters. जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं तो दूरी कुछ नहीं रह जाती. उनके लिए भी अब उनको कुछ चल के ही फिनिशिंग लाइन पे पहुंचना था. एंड द बैनर अबव दैट सेड स्पेशल ओलंपिक्स कुड नॉट हैव बीन नियरर द मार्क. रिमेंबर इट वाज अ स्पेशल ओलंपिक एंड दिस इंसिडेंट हैज मेड इट सो स्पेशल that the incident had found a place in your English book. स्पेशल ओलंपिक वो पहले से ही था, लेकिन इस इंसिडेंट ने उसको और स्पेशल बना दिया. एक मानवता का इंसिडेंट, एक इंसानियत का इंसिडेंट, एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें कोई लालच नहीं था, कोई जीत की होड़ नहीं थी, कोई जीतने की भूख नहीं थी. एक इंसानियत का मामला था जिसमें एक गिरे हुए इंसान की मदद करनी थी. जीत हार की कोई परवाह नहीं. सो it could not have been more special in any way. That's how the race ended. So in this way the race ended with 9 gold medals. So each of them got a gold medal. Have you ever heard this?
आई हैव नेवर। सो हर कैंडिडेट को एक गोल्ड मेडल मिलता है। They came to the finishing line holding hands still, and still they were holding each other's hand. Means they are never going to leave the hand. They are never going to leave this humanity. They are never going to leave this brotherhood. They are never going to leave this cooperation. वो दोनों सब लोग एक दूसरे के हाथ पकड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, उस बैनर के नीचे खड़े थे जिस पे लिखा था स्पेशल ओलंपिक, एंड द बैनर above and 9 smiling faces. They all were smiling, and the banner above them showed, said more than these words ever will, said more than these words ever will. So the banner was saying more than these words. It delivered something special, a great feeling, a great lesson. This is not only a poem, it's a way to express your feeling. It could be, and it cannot be described or explained in words. So it's beyond all words. So जो उन्होंने किया उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती, तभी ये ओलंपिक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो गया। Now what's the message of the poem? David Roth has presented the idea of empathy. He has presented the idea of empathy, the emotions of human being, and how human values are important as the spirit of competition. If you are competing for something, then also you should have this sense of humanity in your heart. Remember, first we are the human beings, then we go for some other thing. The first tag on our face is of human, that we are human. हम लोग humans हैं, हम लोग इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। What is the theme? Theme is that sport is not only about winning medals. Sport is not about winning medal. Sport is to show your spirits also. It is also about learning the values of cooperation, sharing and complementing each other. So that was the explanation. Remember, I have already uploaded the videos of all the chapters which are coming in your board examinations and of class 9th as well. So we'll be sharing some important questions and exam papers as well. So if you haven't subscribed the channel yet, do subscribe it. Press the bell icon to get the latest videos. Thank you.